After a gap of 3 years, the top court is all set to hear pleas challenging the abrogation of Article 370. A 5-judge bench led by CJI DY Chandrachud will hear the case and fix a hearing schedule today. Now, meanwhile, ahead of the big hearing, the centre has filed a fresh affidavit defending the 2019 move that the government has said its decision has brought unprecedented stability and progress in the region. Now, in the 20-page affidavit, it has also highlighted life has returned to normalcy after 3 decades of turmoil and that the residents are enjoying equal rights. It has also argued that terrorism and infiltration has come down significantly. Now, meanwhile, former Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti took to Twitter to express her anguish, saying that the centre's defence lacks logic. उनका राइट बनता है, सेंटर ने अपना जो विपक्ष रखना है सेंटर रख सकता है उसमें, बिकॉज अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड करना है व्हाट्स द फैक्ट्स एंड क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनका राइट बनता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पोजीशन वाजिया कर सकता है वहां पे कोर्ट के सामने। कोर्ट एक इंडिपेंडेंट इदारा है एंड जहां तक द पीपल ऑफ कश्मीर वी आर हम लोग जहां तक सोच रहे हैं इस चीज को लेके वी बिलीव द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, और हम मानते हैं कि डिसीजन जो है वो हमारे हक में होगा, फैसला हमारे हक में होगा और कोर्ट इस चीज की गहराई को देख लेगा तो होपफुली थिंग्स विल बी ऑन द राइट पाथ। देखिए, जहां तक इस एफिडेविट का ताल्लुक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुना है आज पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ख्याल में वो हकायक के खिलाफ है, बरक्स है। हकायक कुछ और है। एक ही मांग है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अवाम को, पूरे मुल्क को दिया है, वो हमें मिलना चाहिए। और हमें जमहूरियत चाहिए, हमें सेकुलर रिवायात चाहिए, हमें वो इख्तियारात चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। यही हमारी मांग है और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हकायक की रोशनी में अपना फैसला देंगे और आईन की और हमारे हुकूक के दिफा में उनका फैसला होगा। So the affidavit has been produced in Honorable Supreme Court in the absence of any democratically elected government in Jammu and Kashmir. I would call it the policeman's affidavit written in saffron ink. And what the affidavit speaks about is about the security situation, which has nothing to do with the abrogation of Article 370. I mean, the affidavit and the government perspective is only about security, which, if we look at through the killings of Kashmiri Pandits, has actually failed. So I don't find any goodness in this affidavit. It's not the people's affidavit. What was Article 370 all about? It was a constitutional fraud committed on the people of Jammu, Kashmir and Ladakh, and as well as on the rest of the country. Imagine the scenario that existed prior to 5th August 2019. It was separatism was flourishing in Kashmir. In fact, Jinnah's two-nation theory of supremacy and exclusivity of Islam was flourishing in Kashmir, right under the watch of secular constitution of India. People of Jammu and Ladakh were deprived of their rights. On 5th of August 2019, we begin the process of dismantling of the Islamo-fascistic. मुझे याद है एक दौर था कि जब मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने हमारे मुसलमान भाई जाते थे और वापसी में डर रहता था पत्थरबाजी की घटनाएं। आज कोई पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं है। ये बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का शोर कश्मीर में थमा है। इसका लाभ कश्मीर के लोगों को हुआ है। ये देश सबका है। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। सबके लिए समान अधिकार है। पहली चीज़ यह है कि जो कुछ लोगों के सामने रखा गया वो गलत है। 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के छोटे से छोटा और बड़े से बड़े लोगों के हक में था। यहाँ लैंड मैनेजमेंट इसी वजह से हो सका। 370 था तो लैंड मैनेजमेंट हुआ, लैंड टू द टिलर्स हुआ। यहाँ नौकरियाँ जो आज तक थीं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही थी। अब जो ये फ्लड गेट खुला हुआ है, नौजवान परेशान हैं, उनको नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है।
हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इंसाफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जाति की गई है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ की गई है। क्योंकि जो आर्टिकल 370 थे, इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ या बात J&K असेंबली के बिना नहीं हो सकती थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज थी। लेकिन उस वक्त की सरकार ने सत्यपाल मलिक साहब को ही जम्मू कश्मीर की असेंबली बना लिया अपने मुफाद के लिए, और जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील करके हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमसे छीने हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से छीने हैं। तो मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आया कि 13 जुलाई से हम शुरू करेंगे, तो हम इसका वेलकम करते हैं। My colleague Harish is joining me on the broadcast to help us with more details. Harish, now after a gap of 3 years, the top court is all set to hear pleas that are challenging the abrogation of Article 370. A 5-judge bench, which will be led by CJI, will hear the case and fix a hearing schedule today. So what are we expecting? Yes, good morning. As rightly said, nearly 4 years after Article 370 was abrogated and 3 years after the last hearing in the Supreme Court, now a new 5-judge bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud will at 10:30 commence hearing a batch of 22 petitions, most of them by activists from Jammu and Kashmir, challenging abrogation of Article 370 that has granted special status to Jammu and Kashmir, especially pertaining to autonomy. Some pleas have also challenged the bifurcation of the state into 2 union territories, that is Jammu and Kashmir and Ladakh. And also tagged along with it is a petition that sought a direction to the Election Commission to hold elections in the state. So now, today the new bench is not expected to go into the merits of the petition straight away, and might take care of the preliminary issues, that is procedural directions about filing of documents and written submissions. It may also fix a hearing timeline, specify a date as to from when the matter can be heard day to day. The bench, in fact, is expected to examine whether Parliament could have scrapped Article 370 without the consent of people of Jammu and Kashmir, and whether the bifurcation of this state into 2 UTs was constitutional. What is significant is that yesterday Centre for an affidavit, additional affidavit, where it said move to scrap Article 370 has led to an unprecedented era of peace in Jammu, Kashmir and Ladakh. The state was facing a brunt of terrorism for the last 3 decades. To curb it, the only way was to remove Article 370. People in the region are now accustomed to peace, prosperity, stability, and greater security. All right, Harish, appreciate you giving us those details. Point taken. We leave it at that and shift our focus